a small token of appreciation, and I'd request the Director of NEZCC, Dr. Prasanna Gogoi, to kindly do the honors. I would also request the Deputy Director, Oliver Sir, to kindly join us on stage while we felicitate Dr. Pratibha Harma. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. We request you to take your seats with the audience. Ladies and gentlemen, you saw wonderful performances not just today, but over the last 3 days. Today is the 4th day here at the 21st Shilpagram Mahotsav. We will take just a short while to prepare the stage for our next performance, but I'll give out a lot of information to all of you while we get the stage ready from backstage. Dr. Prasanna Gogoi, and assisted by his able team members Rajesh Boro, Anjoy Kosari, Rajiv Boro, Sanjeev Kumar Brahma, and Beben Bhushan Boro. Tonight, in this performance, you will get to witness the Basant Ras from the state of Manipur. Basant Ras is one of the 5 traditional Manipuri Basant Ras is one of the 5 traditional Manipuri Ras Leelas. This dance form depicts the love between Lord Krishna and the gopis and is performed on the full moon night of Chaitra, also known as Sajibu Purnima. Lord Sri Krishna goes to the mystical and serene setting of Vrindavan and plays his enchanting flute. His beloved gopis, led by Srimati Radhika, responds to the call of his magical flute and they play holy together. This was introduced by Rajarshi Bhagyachandra Maharaj, the Saint King of Manipur. That will be followed by Hotriya Nitya from the state of Assam. Hotriya dance has a rich history dating back to the 15th century in Assam. Mahaprabhu Srimanta Hankardev, the great Vaishnavite saint, social reformer, poet, playwright, lyricist, painter, sculptor, singer, and dancer of Assam, developed Hotriya dance tradition as a devotional art form to propagate Vaishnavism and Bhakti traditions. The themes played are related to Lord Krishna,
and other Vishnu avatars such as Rama, and stories from epics like Mahabharata and Ramayana are also referred to. Hotya dance remained a traditional community-based art form until its recognition as a classical dance style in the year 2000. Today, it is celebrated and revered across Assam's cultural heritage. That will be followed by Purulia Chow from the state of West Bengal. Purulia Chow is a vibrant mass-based folk dance form from West Bengal's Purulia district, blending martial arts, acrobatics, and folk traditions, depicting stories from epics like the Ramayana and Mahabharata with theatricality. Performed at night with the distinctive masks, costumes, and accompanied by music during spring festivals and other events. Purulia Chow is a UNESCO-recognized art form symbolizing the victory of good over evil. That will be followed by Hosagiri from the state of Tripura. Hosagiri dance is a folk dance form of the Riang Bru tribe of Tripura in northeast India, where male members play musical instruments and the female members perform an acrobatic balancing dance act using props and crops and worshipping the goddess. Props and slow waist movements, I beg your pardon. The dance is mainly performed after the harvesting and the crops, worshipping the goddess of food, Mainuma, and is celebrated during the full moon night of Sharat Purnima. That will be followed by Cherao dance from Mizoram, which is also popularly known as the bamboo dance, and it is a traditional and ancient folk dance from Mizoram, featuring dancers gracefully stepping in and out of horizontally and vertically arranged clapping bamboo poles held by people on the ground, showcasing rhythm, agility, and cultural heritage during festivals like Chapcharkut, symbolizing their harmony with nature. That will be followed by Rikampada from the state of Arunachal Pradesh. Rikampada dance is the most popular folk dance of the Nishi community of Arunachal Pradesh. It is said that the dance and the Nyokum itself were introduced by the forefathers of the Nishis Abotani. The songs and dance are performed to honor various deities. These songs and dances are also performed traditionally by the women folk to please their husbands during Nyokum festival. That will be followed by the Lavani dance from the state of Maharashtra. Maharashtra's bold historical dance form Lavani is a vibrant traditional folk dance known for its energetic rhythms, expressive storytelling, and themes of love, social issues, and politics, performed by women in distinctive 9-yard saris to the beat of the dholki. This dance form originated centuries ago as a form of entertainment for the soldiers and royalty. It features popular styles including the sensual Shringari Lavani and philosophical Nirguni Lavani, often featuring sharp social satires. That will be followed by Jhumur from the state of Assam. Jhumur is a vibrant folk dance of the tea tribes and southern groups hailing centuries ago from the Chota Nagpur region and is now popular in states like Assam, Jharkhand, West Bengal, Orissa, and Chhattisgarh. Jhumur is performed during harvest festivals like Tushu, Karam, along with different kinds of community gatherings. This dance features rhythmic footwork, swaying movements in circular formations, along with songs about life, and accompanied by traditional instruments like madal, dhol, and flute, expressing both joy and hardships. That will be followed by Nzanta from the state of Nagaland. The title of the song and dance is all about Nzanta, which literally means love. The vibrant words of these folk songs and the dance belongs to the Lotha Naga tribe of Nagaland. Normally, the women perform this song and dance during the post-harvest celebration as a gesture of thanksgiving to God for the blessings bestowed upon them throughout the year. The traditional ornaments worn by the women are symbolic of the land's ancient heritage, and the dress signifies the symbol of their cultural identity. That will be followed by Lai Hairoba from the state of Manipur. Lai Hairoba is a significant ritualistic festival and folk dance of the Meiteis of Manipur.
This name means merrymaking of the gods, performed to honor Umanglai, the forest deities, and recreate the universe's creation through dance, music, and rituals depicting one's life from birth to death. It involves intricate movements, traditional penna music, priests, also known as maibas or maibis, and specific dances like Thogal Jagoi, serving as a vital cultural expression of the Meitei spirituality and history. That will be followed by Jindua from the state of Punjab. The folk dance Jindua simply stands for the love of life and is performed by both males and females. While the dancers perform this dance, they speak about their love for each other and how much each one of them means to each other. That will be followed by Kung Khung Go, I beg your pardon, Kung Khung Go from the state of Sikkim. Kung Khung Go is a combination of songs and dance that portrays the experience of a hunted animal told from its own perspective. Fleeing from a relentless hunter, it seeks refuge in the heart of Mother Nature, hiding in caves, sustaining itself on nature's bounty, and weaving through the forest maze. Through agility and instinct, it ultimately escapes a gruesome fate, affirming nature as both protector and sanctuary. That will be followed by Chachokba from the state of Meghalaya. The Khasis narrate their creative perception by performing the Chachokba, also known as the harvest dance. Girls are seen working in the paddy fields in unison and harmony. The spirit of enthusiasm and joy is expressed in their innocent and simple dance. Working in rhythm with nature itself emphasizes the truth that their land is blessed with love and harmony. That will be followed by Bihu dance from the state of Assam. Bihu is an integral part of the Bihu celebrations of Assam. Bihu dance is said to have its roots in the fertility cult. Essentially an expression of youthful vigor and exuberance, young boys and girls dance to the tune of the Bihu songs, which speak of youthful love, nature's bounty, the arrival of spring, and the Assamese New Year. That will be followed by Rai from the state of Uttar Pradesh. The name of the dance Rai is derived from the word Rahai or peace from the Bundeli language. The Rai dance is a unique example of rich folk art of Bundelkhand. Historically, this dance was performed by the dancers of the Bedni community in the courts of the king after a victory in a battle by the kings or Maharajas. This dance also takes place in the Bundelkhand region, especially during Holi and also on other occasions. This dance shows a clear glimpse of Bundeli culture and Parda system. That will be followed by Pung Cholom and Dhol Cholom dance from the state of Manipur. Another highly acclaimed show of the drummers, the Dhol Dholak, is known for a great agility and skill on the part of the players while performing the Dhol Dholak Cholom. Vigorous beating of drums and acrobatic body movements in tandem with rhythmic structure of the talas are the true character of this art form. Dhol Dholak is closely associated with the famous Holi festival of Manipur. That will be followed by Cherol Jagoi and Thangta from the state of Manipur. Thangta is an ingenious display of skill and creativity. Thang meaning sword, while Ta refers to the spear. Thus, in simple words, Thangta is basically the art of wielding the sword and the spear. With the music of drums rendering through the air, this dance is very engaging due to its captivating display of martial arts as they leap, attack, and defend themselves simultaneously. Thangta involves intense breathing methods, meditation, and rituals. This martial art dance form also has a ritualistic significance, as certain movements of the sword are intended to ward off evil spirits, while other postures indicate protection from any possible threat. That will be followed by the Azilamu dance from the state of Arunachal Pradesh. Azilamu dance is a traditional folk dance of the Sherdukpen community of West Kameng district of Arunachal Pradesh. This dance is generally performed at the Gompa during Chokhar festival of the Sherdukpen. It is believed that there was a time when human civilization was threatened by the evil elements. The solution was a bridge that was to be constructed so that the humans could cross to the other side of the river, beyond the reach of the evil elements. However, evil elements would not let the bridge to be completed. Finally, Lopon Rinpoche created the 5 characters of Azilamu from his 5 fingers to perform a dance in front of the evil elements to distract them. Owing to this distraction, finally the bridge was completed and all the human beings managed to cross the river and ward off the evil spirits and lived
happily ever after. At the end, we will have Ravantha, which is not a folk dance from Rajasthan, but a famous ancient bowed string musical instrument considered an ancestor of the violin, crafted from coconut shell and bamboo and played by wandering musicians and storytellers called bhopas, often accompanying narratives or devotional songs integral to the Rajasthani folk music and culture, especially for the Bhil tribe and during performances like Pushkar Mela. So these are the 19 folk art forms that will be presented to you from 12 different states of the Northeast and other parts of India. Ladies and gentlemen, without any further delay, presenting to you the colors of India.
ಮಂದಲಿ ಮೈದ ಗೋಪಿಗಳು ನನ್ನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನೀನ ರಾಸಲೀಲಾ ಹೌರ ಬೃಂದಾ शूर्णित
Astero condo
Rikambo padango aingo ja Rinyambo yamingo aingo ja Pupi bo nyemengo ai ngoja Puber bo nyemengo ai ngoja Rikambo padango aingo ja Rinyambo yamingo aingo ja Kersi bo kermige ai ngoja Nyimyo bo hargela ai ngoja Rikambo padango aingo ja Rinyambo yamingo aingo ja Gumilo te cha salo kojma Gumilo te cha salo kojma Gum gum mavaka yo yo mavaka Gumilo te cha salo kojma Ujiga patama ere nyinela Gumilo te cha salo kojma Jessica patama ere nyinela Gumilo te cha salo kojma Opunga amanga rakoreki Opunga amanga rakoreki Unyiga kuesam rakoreki Opunga amanga rakoreki Pugulo bang pabar rakoreki Opunga amanga rakoreki Amranga lakangalo rakoreki Opunga amanga rakoreki Bang penga bayure rakoreki Opunga amanga rakoreki Amranga panargu rakoreki Opunga amanga rakoreki Darganga di macho rakoreki Opunga amanga rakoreki Balgana ya cuma bena Sataku kapta yuk Satam lak polka taju Bolgana yachme bena Sate kung kabde yuk Satam lek polka taju Bolgana yachme bena Sate kung kabde
ক্ষতিক্ষণে বলে ভেঙেরা হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি ক্ষতিক্ষণে বলে ভেঙেরা হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি ক্ষতিক্ষণে বলে ভেঙেরা হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি ক্ষতিক্ষণে বলে ভেঙেরা আধা রাতি বহলে কি করে করয়া ভাগ জগহনি দিনু সারে বলে ভেঙেরা হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি দিনু সারে বলে ভেঙেরা চুপ চুপ হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি দিনু সারে বলে ভেঙেরা হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি দিনু সারে বলে ভেঙেরা হায়রে হায়রে ভাগ জগহনি দিনু সারে বলে ভেঙেরা
ho hayo hey ha 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 ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਓ ਉਹ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਓ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਈ ਓਏ ਖਾਂਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀ ਓਏ ਉਹ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਓ ਉਹ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਓ ਮਨਸੂਰੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਖਵਾਊ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਖਵਾਊ ਚੂਰੀ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਊ ਦੂਰੀ ਹੋ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆਂ ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਨੀਆਂ ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਨੀਆਂ ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਾਲਿਆ ਦੋ ਲਾਲੜੀਆਂ ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਾਲਿਆ ਦੋ ਲਾਲੜੀਆਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਆਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ ਢੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ ਢੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਦੂਏ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਹੋ Kunkungo, kunkifo, panko flöt banden bosho, kyonkyongo, kanyufo, lungten dungi damten bosho, kunkungo, kunkifo, panko flöt banden bosho, kyonkyongo, kanyufo, lungten dungi damten bosho, lungten dungi damten bosho.
Punzop varlagati persho Lopi zoban gobam sho Punzop varlagati persho Lopi zoban gobam sho Siti sona Kidik menin Lang jeng se gorgon go tarnan sho Siti sona Kidik menin Lang jeng se gorgon go tarnan sho Kang peritam Sekek pego Ako sembene tikla bosho Kang peritam Sekek pego Ako sembene tikla bosho Go Thank you for Thank you for Long show Long tên tung đi thầm thêm bó sơ Thêm bó sơ Thêm bó sơ
মিনা কৰা গেজেৰা এখায়ো জানো তুলহৈকে মই ৰাখিছো তুলহৈকে মই ৰাখিছো সাথী মই কাহিনো ঘূৰণীয়া এ মইনা মইনা ঐ জীৱনো দুদিনীয়া জীৱনো দুদিনীয়া আয়ো জানো জোনৰ দেশত থাকিম গৈ জোনৰ দেশত থাকিম গৈ আমি
Ladies and gentlemen, from the land of Blue Hills and Red Rivers, Assam, presented Bihu dance, Hatriya Nitya and Jhumur. Ladies and gentlemen, from the land of the rising sun, Arunachal Pradesh, presented Azi Lamu dance and Rikampada. From the land of Highlanders, Mizoram, presented Sheva dance. From the Board of Clouds, Meghalaya, presented Chachakra. From the land of music, Tripura, presented Hosagiri dance. From the land of Snow Lion, Sikkim, presented Kumkhumbo. From the land of festivals, Nagaland, presented Nzanta. From the state of Uttar Pradesh, representing North Central Zonal Cultural Center, presented Rai. From the state of West Bengal, representing East Zonal Cultural Center, presented Purulia Chao. From the state of Maharashtra, representing South Central Zonal Cultural Center, presented Lavani. From the land of beautiful valleys, Manipur, presented Basantaras, Sherol Jagoy, Thangta, and Lai Hairoba.
Ladies and gentlemen, there is no other country like India. A country full of colors. A country whose tradition is so rich and so vibrant. All of this put together in one stage. 12 states, 19 folk dance forms. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? आप सबको पसंद आया कि नहीं? Well, ladies and gentlemen, like I said, and I've been announcing all this while, कि भारत के 12 राज्यों से 19 अलग अलग तरह के लोक नृत्य और संगीत का यहां प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इस सब को एक धागे में पिरोया है नॉर्थ ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर और संगीत नाटक अकादमी अवार्डी डॉक्टर प्रसन्न गोगोई। मैं प्रसन्न गोगोई जी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। Ladies and gentlemen, it is such a sight to see the rich culture and vibrant culture of our beautiful country called India. Well, ladies and gentlemen, in the same breath, I'd like to call upon stage Dr. Prasanna Gogoi's able assistants, Rajesh Boro, Anjoy Kosari, Rajiv Boro, Sanjeev Kumar Brahma, and Beben Bhushan Boro. It's a teamwork. I would also like to take this opportunity to thank the entire staff of NEZCC who have been tirelessly working to put all of this together. Ladies and gentlemen, we are really honored and grateful to our special guest present here this evening. And I'd like to call upon stage Dr. Orup Bordoloi, Project Director, Sangeet Natak Academy. But I'd like to thank them, Dr. Orup Bordoloi, Sangeet Natak Academy awardee, Guru Ranjumani Soikia, and a lot of other eminent guests who are present here to encourage us this evening. Well, right now, a lot of the troops will be leaving for their hometowns. So we would like to take this opportunity to felicitate all the troop leaders from each and every troop that has joined us and made this wonderful and epic presentation possible. Yes. First of all, yeah, we can go for the group photograph. Yes. There we go. Yes. Well, there is no other country like India, and this stage is proof of the fact. It's indeed with great honor and pleasure that I'd like to announce. First of all, I'd like to call upon the troop leader from Manipur who presented Basant Ras. I would request all the group leaders to kindly come forward. जोरदार हाथ तालियां होनी चाहिए.
सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं उन लोगों को। ग्रुप लीडर्स, ग्रुप के सभी सदस्यों को ये सर्टिफिकेट्स, ये प्रमाण पत्र ये हैंड ओवर कर देंगे। नेक्स्ट मैं बुला रहा हूं असम के बिहू ग्रुप के ट्रूप लीडर को। A big round of applause. नेक्स्ट मैं आगे बुलाना चाहूंगा हॉट्रिया नृत्य के ट्रूप लीडर को। असम के हॉट्रिया नृत्य का प्रदर्शन करने वाले ट्रूप लीडर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा झूमर ट्रूप के ग्रुप लीडर, असम के झूमर ट्रूप के ग्रुप लीडर। ये देखिए, ये देखिए, इसके बाद मैं आगे बुलाना चाहूंगा मणिपुर के लाय हारोबा ट्रूप के लीडर, रतन जी को बहुत बहुत बधाई, उनके पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई। और अभी जो कुछ एक ढोल बज रहा था कहीं से, वो बजना चाहिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा पुंगचोलम के ट्रूप लीडर को, मणिपुर के पुंगचोलम के ट्रूप लीडर बहादुर जी। मणिपुर के थांगता के ट्रूप लीडर कृपया आगे आ जाएं। प्रियदर्शिनी, बहुत बहुत बधाई। थांगता तो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, डर ही लग जाता है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मेघालय के शतपिल्यांग के ग्रुप लीडर, बहुत बहुत बधाई। मेघालय द बोर्ड ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मिजोरम के चेराओ डांस के ट्रूप लीडर, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा एनईजेडसीसी के हेडक्वार्टर स्टेट नागालैंड के ट्रूप लीडर एनजांता के ट्रूप लीडर। अब मैं बुलाना चाहूंगा सिक्किम के कुंकुंको के ट्रूप लीडर, सिक्किम के कुंकुंको के ट्रूप लीडर। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा त्रिपुरा के होजागिरी डांस के ट्रूप लीडर को, देवाशीष। देवाशीष रियांग, बहुत बहुत बधाई। आपके ट्रूप को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा महाराष्ट्र के लवानी डांस के ट्रूप लीडर को, अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के राय डांस के ट्रूप लीडर को, अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा राजस्थान के रावण हत्ता के ट्रूप लीडर, राजस्थान।
सुगनाराम जी, ये पगड़ी भी उन्होंने ही दी है। सर का पूरा गेटअप चेंज कर दिया आज उन्होंने ही, खास सर के लिए और मेरे लिए ये तोहफा लेके आए वो। सुगनाराम जी पीछे, अच्छा पीछे है, हाँ। सुगनाराम जी का इसके बाद एक सोलो परफॉर्मेंस भी रहेगा। जोधपुर के सुगनाराम जी इंटरनेशनली एक्लेम और डॉक्टर प्रसन्न गोगोई के साथ देश विदेश बहुत जगह में घूमे हुए हैं अपना रावण हत्था लेके। এখন আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরুলিয়া চার ট্রুপ লিডারকে। Well, ladies and gentlemen, we cannot skip felicitating the able assistants of Dr. Prasanna Gogoi. I would request Dr. Prasanna Gogoi to felicitate Rajesh Boro. Rajesh Boro, an able assistant, like a shadow of Dr. Prasanna Gogoi. And wherever he goes, whatever he does, Rajesh is always there. And not just Rajesh, we would also like to felicitate Anjoy Kosari. We would also like to take this opportunity to felicitate Rajiv Boro. We would also like to take this opportunity to felicitate Sanjeev Kumar Brahma. And last but not the least, Beben Bhushan Boro. अब हमारे अरुणाचल के ट्रूप लीडर्स, ए फॉर अरुणाचल है, अरुणाचल के ट्रूप लीडर्स को मैं, आजी लामू और रिकम पादा के ट्रूप लीडर्स को मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए। अरुणाचल प्रदेश के आजी लामू और रिकम पादा के ट्रूप लीडर्स। ए फॉर क्या है? अरुणाचल। उत्तर पूर्व का अगर सबसे खूबसूरत राज्य भी कहूं गलत नहीं होगा। द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, the beautiful Himalayas, the beautiful valleys. और उतना ही खूबसूरत उनका लोक नृत्य और संगीत। From NEJCC, we would like to felicitate Ricky. So 10 सालों से है हमारे साथ। I would like to request our Deputy Director Oliver Temsu Pongan, please kindly come to the stage. Oliver to ase na? Ase, aye ase. So Ricky Sharma, he has been associated with NEJCC for last 10 years. Each and every program, सब यही लेके जाता है, as an EMC and as an anchor, and his presentation is so nice that we always remember him, but sometimes he is so busy, he is preoccupied. But this time अभी हम लोग का लाख था कि रिकी जी को मिल गया। और आपको कैसा लगा रिकी जी का अनाउंसमेंट? कैसा लगा? One and only Ricky Sharma. So we would like to felicitate Ricky Sharma. Our Deputy Director Oliver T. Pongan is felicitating him. Okay. Thank you, sir.
एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम शुरू किया था, ये 10 सालों का जो सफर रहा है, इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। 2015 सबसे पहले एनईजेडसीसी के साथ मैं जुड़ा, जब एनईजेडसीसी के हेडक्वार्टर्स दीमापुर में माटी के रंग बोल के एक नेशनल लेवल का इवेंट है, जो कि तब के डायरेक्टर दीमापुर तक ला सके थे, और वो बहुत ही बड़ा इवेंट था। और मेरा ये सौभाग्य था कि मैं एनईजेडसीसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जुड़ सका। इन 10 सालों में उत्तर पूर्व और भारत के लोक नृत्य, ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में एनईजेडसीसी से मैंने जितना सीखा है, ये मेरा सौभाग्य रहा है। एंड आई विल forever be indebted to NEZCC for the opportunity that they have been providing, and I look forward to keep working for NEZCC in the near future as well. Thank you so much. Okay, अब जैसा कि हमने कहा था कि राजस्थान के सुगनाराम जी भोपा जी यहां पे हैं, उनका एक स्पेशल प्रेजेंटेशन, सोलो प्रेजेंटेशन यहां रहेगा। सभी आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि हम उनके प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकें। सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा स्पेस सुगनाराम जी के लिए क्रिएट कर दे। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है यहां पर। नहीं, सुगनाराम जी राजस्थान के इंटरनेशनली एक्लेम्ड फोक आर्टिस्ट हैं। कल रात मैं इनके साथ बैठा था, इन्होंने रात को ही मुझे वादा किया कि कल आपको मैं राजस्थान का एक तोहफा दूंगा, और आज शाम को उन्होंने अपना वादा निभाया। आज पूरा का पूरा इवेंट मैंने ये साफा बोलते हैं इसको, पगड़ी तो बोलते ही हैं, ये साफा बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। और कुछ मेरे राजस्थान के दोस्त मुझे गेट पर मिल गए थे, तो मैं बाहर जा रहा था कुछ गाड़ी से कुछ लाने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे पूछ लिया कि आप राजस्थान से हैं क्या। तो मैं बोल दियो मने थोड़ो थोड़ो मारवाड़ी बोलना आवे, बट हूं तो मैं असम को ही। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू Sugnaram Bhopaji, all the way from Rajasthan, the internationally acclaimed artist. सुगनाराम जी के परफॉर्मेंस के बाद अंत में हम इस कार्यक्रम का अंत भारत के राष्ट्रगान से करेंगे। सभी से निवेदन है कि दिल थाम के बैठिए और सुगनाराम जी का
इस परफॉर्मेंस का रावण हत्था जो उनके हाथ में है अभी फिलहाल, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। आइए सब मिलकर रावण हत्था का मजा लेते हैं।
उठे तो कुरिजा मारे लागो भारे कर तेरी और एक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का एक बार फिर से। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। आज की इस शाम का ये आखिरी पड़ाव, सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए जहां भी हैं आप, वहीं से आप कृपया भारत के राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सब आके, सब तैयार हैं सब? जी हां। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद। इसी के साथ आज की शाम का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। कल शिल्पग्राम महोत्सव का आखिरी दिन है। सभी से निवेदन है कि यहाँ और भी बहुत सारी प्रस्तुतियां रहेंगी। आप आइए, यहाँ के कलाकारों को आप प्रोत्साहन दीजिए, लोक कला को प्रोत्साहन दीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। जो ये लोक कला के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, ये हमारी धरोहर है। इसको ये लोग बचा के रखे हुए हैं, इसको आगे लेके जा रहे हैं। हमें इनका आभारी होना चाहिए। एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी आर्टिस्ट प्रेजेंट हियर, each and everyone who has been involved with Shilpagram Mahotsav, the people যিসকল লাইট আৰু সাউন্ডৰ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ। ষ্টেজ প্ৰডাকশ্যন গোটেইখিনি যিসকলে ষ্টলছ দিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো। NEZCCৰ যিসকল ষ্টাফে ইমান দিনে কষ্ট কৰি এই গোটেই আয়োজনটো সম্ভৱ কৰিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো। আৰু কেপ্টেইন অফ দ্য শ্বিপ, ডাইৰেক্টৰ অফ NEZCC ডক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈ, তেখেতক আমাক এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো। Thank you so much, everyone. We hope to see you tomorrow, the final day of Shilpagram Mahotsav. Till then, this is Ricky Sharma saying goodbye, good night, Shab Khair.